Okay, so a quick recap. In last two videos about clinical trials. Uh, in my first video, I spoke about the basics of clinical trials. Uh, you know, क्या क्या होता है, terminologies, you know, what's it between clinical and preclinical, phase one, phase two, phase three, phase four में क्या differences हैं, and so on and so forth. So ये first video था. If you have not watched it, please go and watch it. Because it will be helpful for you to understand clinical trials plus searching में भी help करेगा and आगे चलकर और understand करने में help करेगा. That's first. Second one was about city.gov. So city.gov एक US based global website है. It's a database basically of all the clinical trials, and you can always go and search here. This is very good website, most comprehensive website so far. So today's video will be dedicated to this website only, and then next video I will go on and talk about other websites as well. But yeah, so this video is going to be dedicated about this and this website only. Now, in the second video, we discussed about glossaries, different sections of this website. Um, Again, I'm not going to, you can go through that video, the second video basically, part two of this video. Of the series, basically part two of the series, and then learn from there. And if you've not gone through the glossary section so far, I would really advise you and recommend you to go through these glossary section, learn the definition, and then move on with the with this third version or the third part of the video. If I'm not able to cover the whole thing in this video, uh, I will try. So I will try. If the video becomes a little longer, that's okay. But I'll try to cover this video with how to search and what information means what kind of. And then the next video would be about other websites, and yeah. So yeah, that's that. And then maybe after that, we will work on other website, other tools or other places as well in terms of research. Okay. Firstly, this is how the search looks. You can. So this is basically conditions or disease. So you can put it on any diseases which you want in this box basically. So for example, I put in um, prostate cancer. Okay. So you can just select out of these, or you can just press enter, and you'll get all the prostate cancer. So with this website, the good thing is that it also looks out for the synonyms. So here are all the synonyms for prostate cancer. So when I put in prostate cancer, these are all the synonyms it has, uh, taken. You can view this all information in a card view, which is this way, or in a tabular way, which is this form basically. Okay. Um, these are advanced filters. I will talk about those filters as well. Now you can sort it by the newest first or the relevance. Okay. So if I do it this, you can see this. Okay. Previously I talked about that you can also subscribe to the RSS feeds. So this is a very generalistic search about prostate cancer. But if I go with this kind of search also, I can put an RSS feed. I'll just select this, and one is new studies first posted in last 15 days. So for the first time, obviously, if last 15 days का ये लेगा, बट उसके बाद इनको अपडेट करता रहेगा, ठीक है, एंड इट विल ओनली कैप्चर न्यू स्टडीज. बट इफ यू सेलेक्ट दिस वन, it will capture new and existing studies added or modified in last posted period of 14 days. तो ये इस तरह से करेगा. Then create RSS link or copy RSS link. So if I click on create,
So because I already had the RSS feeder, I can subscribe to it. So once I subscribe it, it goes onto my page. So I'll not do that. Sorry. Uh, so not well actually. Okay. Uh, or what you can do is if you have an Outlook RSS feeder or any other feeder, then you can copy the RSS link. Okay, it is copied, and then you can go on to the, like for example here, RSS feeds. I'll click here. Okay, and see it added. So I'll remove it. Okay. So this is how you put an RSS feed. Now you can manage the table. So this table you can manage. How you can manage? You can click on this. So this is information. This is the information which is already, visible here. If you, for example, don't want to this in any of this information to be visible, not visible, then you can do this. You can change the preferences of the information, and then you can select or deselect from here also. For example, I want to select this. Then I want to select acronym. For example, collaborator. Okay. Uh, Other ID. Study start date, PCD, primary completion date, study completion date. So this is how, okay, I want to select. So I've selected that. It has gone added here. ठीक है. Once it is added, you can see ये सारा information यहाँ पर available है. यहाँ आ गया है. ठीक है. Okay. Now let's go on to the advanced search. जो मैंने आपको अभी, मतलब ये मैंने आपको सर्च के बारे में दिखा दिया. अच्छा, another thing what you can do is you can download it. You can download the whole thing. You can bookmark this. Save selected studies basically. Okay. So if I click on download, it will ask me कि मुझे किस format में चाहिए. So CSV is the best format you can do. JSON and RIS is basically used for other purposes, and programming and all that. Then you can select what all information do you want in your Excel. So if I select all, I click on download. See, it is getting downloaded. ठीक है. And if I download, this is how the information will look like. सारी information आ गई है जो चाहिए थी मुझे. ठीक है. This is how it looks like. देखो 6,000 trials हैं ये basically. See 400, 500, no, sorry, 3,000 something. It is showing. So yeah, कोई और नीचे भी है, but I'll not go there. I'll just close it. ठीक है. So अभी तक मैंने क्या बताया कि सर्च कैसे करना है, बेसिकली इंडिकेशन डाल के. उसके बाद RSS फीड्स कैसे लगाते हैं, टेबल फॉर्म में या कार्ड व्यू में. आई हैव आल्सो टॉक्ड अबाउट RSS फीड कैसे लगाते हैं. देन सॉर्टिंग किस तरह से करना है, मैनेज किस तरह से करना है टेबल को, मतलब आपको क्या क्या देखना है. अगर कार्ड व्यू की बात करते हैं तो कार्ड व्यू में भी आप RSS फीड लगा सकते हैं. ठीक है. इट्स नॉट जस्ट कि आप टेबल व्यू में ही लगा सकते हैं. टेबल व्यू में आपको मैनेज करने का ऑप्शन मिलता है. ठीक है. डाउनलोड करने का ऑप्शन यहाँ पर भी है. ठीक. अगर if I select one, तो ये बस एक को ही डाउनलोड करेगा. ओके. सो या दिस इज हाउ इट वर्क्स. तो अभी ये हमें समझ में आया कि हमने कैसे सर्च किया है. ठीक है. एक ही इंडिकेशन. अभी लेट्स मूव आउट. ओके. सो फॉर एग्जांपल मुझे प्रोस्टेट कैंसर सर्च करना था. ठीक है. अदर टर्मिनोलॉजी मेरी हो सकती है
एनीथिंग यहाँ पर दिस इज फ्री टू राइट ऑप्शन। तो इसमें मैं कोई भी मॉलिक्यूल का नाम लिख सकता हूँ या कुछ और भी इंफॉर्मेशन लिख सकता हूँ। लेट्स जस्ट से दैट ABC। ठीक है। तो आई कैन ऐड NCT IDs ऑल्सो। So this is free for research basically. So अगर आपके पास NCT ID है, you just come here, put this NCT ID, sorry, put this NCT ID and you can search it. Intervention. तो इंटरवेंशन और ट्रीटमेंट में आप जो भी इंफॉर्मेशन डालना है कि लाइक फॉर एग्जांपल आई नीड इंट्रावेनस इन्फ्यूजन फॉर एग्जांपल। ठीक है। आई वांट स्टडी इन यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है। सो आई लुक फॉर दिस। सो मैंने सेम सर्च किया है, अब आप रिजल्ट्स को देख लो, 182 रिजल्ट्स है बस। ठीक है। इसी को मैं आपको दूसरे तरीके से भी करके दिखाता हूँ। प्रोस्टेट कैंसर इंट्रावेनियस, लोकेशन नहीं डालता हूँ, ऑल स्टडीज करता हूँ। सो यू कैन सी दिस 282 रिजल्ट्स। ठीक है। तो दिस इज हाउ यू पुट द फिल्टर्स एंड ऑल। अच्छा, अब इसके अंदर मुझे अगर एडवांस सर्च करना है, सो एडवांस सर्च करने का ऑप्शन मुझे इसके नीचे ही मिलता है। तो फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट अ स्टडी which is, so I'll try to find show you something very unusual. Let's do this. ठीक है। So I'll show you something. मैंने ब्रेस्ट कैंसर सर्च किया, आई हैव गॉटन 14,416 स्टडीज। ठीक है। नाउ इफ आई सर्च ब्रेस्ट कैंसर अगेन विद मोर फिल्टर्स, इस बार मैं फिल्टर में सिर्फ मेल डाल देता हूँ। अब यू विल से काफी लोग यही बोलेंगे कि कोई भी ट्रायल नहीं आएगा, बट सॉरी, कॉन्ट्रेरी टू योर बिलीफ, breast cancer can happen in men also. Okay, so see, there are 5,265 studies which are assessing breast cancer in male population. और अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं तो see this. This is a trial. This is a monopar therapeutics who is assessing a radio, hopefully, yeah, it's a radio therapy. Okay, and let me show you. Sex is eligible for study. See, both the male and female are eligible for this. See, both male and female must agree to highly effective whatever. Males also are eligible for this study. ठीक है. Let me show you another thing. अब यू से कि हिमांशु ये तो फीमेल। See, the result say, oh, sorry. Apply filter 14,367 14,367 स्टडीज ऐसी हैं जो फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर के केसेस में फीमेल को देख रहे हैं। ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन। तो हमने पुरानी सर्च के साथ चलते हैं। ठीक है। ओके, अब मुझे वो स्टडीज देखनी है जिसमें प्रोस्टेट कैंसर सिर्फ चिल्ड्रन में चेक हो रहा हो। आई कैन पुट इन अ फिल्टर। सी 600 स्टडीज प्रोस्टेट कैंसर में, मतलब चिल्ड्रन में भी हो रहा है बिलो 17। ठीक है। देयर आर 600 स्टडीज लाइक दैट। ओके, अभी मैं बार-बार बाहर नहीं जाऊँगा। अभी I'll start putting the filters here. So these are the filters which are also there in the advanced search. But advanced search का लुक थोड़ा अलग होता है। I'll show you the look first.
So see, gender criteria, then you have age range. Manually you want to put any range specifically like 20 years to 15 years or something like that, then you can do that. ठीक है. Except healthy volunteers, yes, आप उस पर भी select कर सकते हो. ठीक. Then if you want to just check out a phase 1 study, early phase 1 study and all that, वो आप कर सकते हो सिर्फ. Interventional observational studies, expanded access study, ये studies with result or without result, स्टडी का प्रोटोकॉल हो, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस प्लान हो, ये इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स उसके अंदर होने चाहिए. फंडर टाइप कौन है? एनआईएच यूनिवर्सिटी, मतलब एकेडमिक है. नॉन फेडरल एजेंसी भी हो सकती है फंडर, which could be non-federal. US non-federal agency could be like a CRO basically. Then comes industry, a private university in other US. Other US federal agencies. Except NIH, there could be other agencies like universities basically. ठीक है. And all others में individuals, universities, organizations, and industry is basically pharma companies. Now you can filter that, filter in the date range also. कि study start जो है वो let's say 1st of August से लेके आज की डेट था ये चीज. So here you see 5,787 studies have been submitted. ठीक है. अभी मैं इसको आज मतलब लेट्स डू दिस फ्राइडे का ही डेट डालते हैं और देखते हैं कि फ्राइडे में कितनी स्टडीज हुई थी. 19 studies were posted. Okay. One of them is Sanofi, GSK, which is assessing the alcohol-related, liver disease and a couple of others. Okay. So I was showing you. ठीक है. सो डेट रेंजेस आ गए हमारे सारे. ये हमने स्टडी स्टार्ट की डेट डाली थी. प्राइमरी कंप्लीशन की डेट से वी कैन फिल्टर. फर्स्ट पोस्टेड, पहली बार पोस्ट कब हुई थी, स्टार्ट हुई हो नहीं हुई हो, फर्स्ट पोस्ट कब हुई थी, तो वो हम यहाँ से डाल सकते हैं, सर्च कर सकते हैं. रिजल्ट्स कब फर्स्ट टाइम पोस्ट हुए थे उससे फिल्टर कर सकते हैं. लास्ट अपडेट कब हुआ था, स्टडी कंप्लीशन डेट कब है. ठीक है. More ways to search. Acronym. आपको acronym याद है ट्रायल का. So I'll show you an acronym. Here is the trial. Here's the name. I know about this because we couple of days back only I saw about this, so yesterday I recalled it. तो acronym से, outcome measures से, sponsor या collaborator के name से. So I want to search for Pfizer. So that sponsor में lead कौन है? If there are more than one sponsor, lead कौन है? ठीक है. Study ID, NCT ID I've already told you. Facility name. मुझे अगर search करना है कि John Hopkins, why not? These 3,570 studies are John Hopkins. ठीक है. तो ये मैंने आपको फिल्टर का तरीका दिखा दिया, एडवांस सर्च का तरीका दिखा दिया. अब मैंने एडवांस सर्च करके, मैंने कोई भी इस तरीके की सर्च करके आई कैन पुट इन फिल्टर्स ऑन माय ओन नाउ. मुझे जैसे देखना है. सो फॉर एग्जांपल आई वांट टू चेक व्हिच आर दी नॉट येट रिक्रूटिंग स्टडीज, व्हिच आर प्लान्ड स्टडीज बेसिकली. तो इनका रिक्रूटमेंट स्टार्ट नहीं हुआ है, ये आकर लिस्ट हो गई है, बट ये रिक्रूटमेंट स्टार्ट नहीं हुआ है. सो वी कॉल इट a planned study basically. Then recruiting. So recruiting are those studies which have started the recruitment, and it could have started any time basically. But yeah, the tag basically says recruiting. तो अभी मैं आपको एक स्टडी दिखा देता हूँ. ठीक है. Then
no longer requiring participants. So there are three types of those studies basically. Active non-recruiting. Active non-recruiting जो होती हैं ongoing studies होती हैं. These are those studies basically जिनमें patients का recruitment पूरा हो गया. So for example, and they were recruited 100 patients. So 100 के 100 patients recruit कर ली, but the study is ongoing. The reason is क्योंकि उसमें patients की dosing चल रही है, अभी वो primary endpoint उनका reach नहीं हुआ है. So it's an ongoing study. Then goes a completed study. So सारा complete हो चुका है study, results आ चुके हैं. Then obviously we have terminated studies. Terminated वो होती है जो in between या starting point पे ही खत्म हो जाती है. Enrolling by invitation are mostly academic studies, जो yeah, phase 4 kind of studies. I'm not saying 100%, but yeah, few studies are like that. जो enrolling by invitation होती है means not everyone can enroll in this. They will be enrolling. They will reach out to doctors, multiple doctors of their own, and these doctors will invite certain participants. Okay, so that is enrolling by invitation. Then we got suspended studies. So a lot of time what happens is कि मेरे analyst also मेरे पास आते हैं कि मानसू हम suspended studies लें या ना लें. So why not suspended studies? उन्होंने withdrawal नहीं बोला, उन्होंने terminated नहीं बोला. They have said that this is a suspended study. Suspended means it is temporarily suspended. उसके पीछे there could be multiple reasons. Multiple reasons like कि पेशेंट डेथ हुआ है तो इसलिए स्टडी को सस्पेंड किया गया है, ऑन होल्ड डाला गया है अभी के लिए. ओके, देन अनदर रीजन इज बेसिकली कि प्रोटोकॉल अमेंड हो रहा है स्टडी का. सो पहले कंपनी जो है 100 पेशेंट रिक्रूट कर रही थी, बट नाउ दे वांट टू रिक्रूट टू 120 पेशेंट बेसिकली. सो दे हैव सस्पेंडेड द स्टडी. प्रोटोकॉल अमेंड हो रहा है. प्रोटोकॉल अमेंडमेंट मींस कि पहले एंड पॉइंट एक्स था, बट अब वो एंड पॉइंट वाई को करना चाहते हैं. तो दैट्स कॉल्ड प्रोटोकॉल अमेंडमेंट. ठीक है, इवन योर रिक्रूटमेंट नंबर को चेंज करना भी इज ए प्रोटोकॉल अमेंडमेंट. तो दैट्स व्हाई द स्टडी हैज बीन सस्पेंडेड. कोई डेथ हो गया है, कोई एडवर्स इवेंट आ गया है, एंड एफडीए ने बोला है कि एथिक्स कमेटी के साथ ये व्हाट इज दैट डेटा मॉनिटरिंग and something board, basically DMSB या इंडिपेंडेंट कमेटी, एनालिटिक्स कमेटी के साथ इनसे अप्रूवल लीजिए एंड देन कंटिन्यू विद दिस. सो उनकी वजह से these studies get suspended, and unless they say कि स्टडी विथड्रॉ हो गया है या टर्मिनेट हो गया है, you should always consider the suspended study, because sooner or later it's gonna start and it's gonna impact your landscape like anything. Because आपने मान लो कोई एक मॉलिक्यूल है which is at phase 3 and अभी उसका स्टडी सस्पेंड हुआ because they want to increase the patient number. आपने उसे इग्नोर कर दिया, ठीक है, you have not included that molecule in the landscape, and आपने अपने उसे क्लाइंट के साथ या अपनी टीम को भेज दिया. And one thing led to another. वो basically molecule अब start भी हो गया, but nobody is monitoring that molecule. And अचानक से क्या होगा, at very one day आप किसी कॉन्फ्रेंस में होंगे and you will get to know कि अरे ये भी कोई molecule है और इसके phase 3 के रिजल्ट्स आए हैं, phase 3 के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं. And we have seen that. I have seen that in my experience, so you should consider suspended studies. Withdrawn studies, they have been withdrawn. It's as good as terminated, but terminated एक अलग definition है, withdrawn अलग definition है. Withdrawn is mostly set to those studies जो recruitment start करने से पहले उनको मतलब हटा दिया गया. And whereas terminated are those जो रिक्रूटमेंट वगैरह स्टार्ट हो चुका था, सब कुछ स्टार्ट हो चुका था, एंड देन उनको टर्मिनेट करा गया फॉर वॉट एवर रीजंस. द रीजंस आर कुड बी बिजनेस डिसीजन, इट रीजन कुड बी adverse events, safety concerns, efficacy concerns, a lot of other things basically. So इसलिए terminate किया जाता है. And then there are unknowns. Okay, so unknowns are the tricky one. The most tricky one is an unknown one.
एंड मोस्टली आपको पता चलेगा कि अननोन्स आर दोस विच आर लाइक चाइनीज, जापानीज और एनी अदर थर्ड वर्ल्ड नेशन के जो ट्रायल्स हैं वो अननोन पे जाते हैं। द रीजन, और बहुत छोटी कंपनीज के ट्रायल्स, बहुत बहुत छोटी प्राइवेट कंपनीज जो होती हैं उनके ट्रायल अननोन में जाते हैं। द रीजन इज पीसीडी 2000 जो जनवरी 2024 थी, जनवरी 2025 तक उन्होंने उस पीसीडी का कोई अपडेट नहीं करा, या एससीडी का अपडेट नहीं करा, और ना ये डाला कि स्टडी ने रिक्रूटमेंट कंप्लीट कर लिया है या नहीं करा है, व्हाट्स स्टेटस बेसिकली, वो उन्होंने कुछ भी अपडेट नहीं करा है। देन इन दैट केस इट गोज टू अननोन। तो अननोन के केस में हमें क्या करना चाहिए, वी शुड ऑलवेज कंसिडर देम, बट उनको चेकआउट करके वी शुड स्टॉप स्टार्ट रिमूविंग देम। सो फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट एक्स है, अननोन में है उसका ट्रायल, सो व्हाट विल डू इज कि हम उसकी कंपनी की वेबसाइट पर जाएंगे, विल चेक इट आउट कि भाई व्हाई इट इज शोइंग अननोन। हो सकता है कंपनी प्राइवेट कंपनी हो, उन्होंने ct.gov अपडेट नहीं किया हो, बट दे they are still recruiting or they have completed recruitment, उन्होंने रिजल्ट प्रेजेंट कर दिया है वगैरह वगैरह। सो फर्स्टली अननोन्स आर वेरी लेस। मतलब जब आप प्रोस्टेट मतलब सॉरी जब आप किसी स्पेशल इंडिकेशन को लेकर के चलते हैं, अभी हमने कोई इंडिकेशन नहीं लिया हुआ है, अभी हमने सिर्फ एकेडमी में जॉन हॉपकिंस फैसिलिटी में जॉन हॉपकिंस डाला हुआ है हॉस्पिटल। तो यू नो इसमें इसलिए अननोन स्टेटस वाली बहुत सारी है, बिकॉज मतलब हाँ, तो यूजुअली जब हम थेरेपी एरिया या इंडिकेशन स्पेसिफिक लेते हैं तो अननोन्स अपने आप कम हो जाते हैं, एंड देन यू जस्ट गो चेक आउट दोस अननोन्स एंड फिल्टर देम आउट बेसिकली। ओके, सो दीज आर द फिल्टर्स। सो हमने जस्ट अ क्विक रिकैप, हमने क्या क्या रिसर्च कर लिया, हमने किस तरह से सर्चिंग की जाती है इंडिकेशन के हिसाब से, हमने आरएसएस फीड लगाना सीख लिया, व्यूज देख लिए, टेबल व्यू और कार्ड व्यू, हमने प्रायोरिटाइजेशन सॉर्टिंग देख लिया, हमें कैसे डाउनलोड करना होता है हमने वो कर लिया, आरएसएस फीड्स कैसे लगाने होते हैं वो हमने कर लिया, वी हैव अंडरस्टूड ऑल द फिल्टर्स, एडवांस मोड्स एंड एवरीथिंग। नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग इज लेट्स गो एंड delve into the trial। तो अभी अपन लोग एक ट्रायल में delve करते हैं, लेट्स सी व्हाट ट्रायल विल delve in। ओके, लेट मी जस्ट डू दिस। आप ऐसे फिल्टर्स लगा सकते हैं, सो आई एम जस्ट पुटिंग अ फेज 3 का फिल्टर, फेज 3 इंटरवेंशन इंडस्ट्री, एंड दैट्स माय फिल्टर। सो मैंने 4 फिल्टर्स लगा दिए हैं, 4 फिल्टर्स are 557 on that। So I want to, okay, let's try this one। Okay, okay. So this is an NCT ID. NCT ID is an identifier. It is unique for each trial. ठीक है। From here you will get to know कि who is the sponsor, sponsor कौन कर रहा है, मतलब who is the owner of this product, so how many biosciences ने इसको sponsor किया है, which indication, this is the indication, ठीक है, what's the molecule name, this is the molecule name, but we'll get that information again also, we'll verify this। and लास्ट अपडेट आपको, लास्ट अपडेट पोस्टेड जो था वो 19 सितंबर को, सो वेरी रिसेंटली अभी ये पोस्ट मतलब इसमें लास्ट अपडेट हुआ है। ठीक है, इधर से इफ वी सी स्टडी की डिटेल, रिसर्चर का व्यू, so if we see the researcher view, तो रिसर्चर का व्यू ये है। ठीक है, मतलब कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड ऑल। अभी रिजल्ट्स नहीं आए हैं तो रिजल्ट्स आर नॉट पोस्टेड है, क्योंकि वो खुद कह रहा है कि एस्टिमेटेड जो है वो 26 में है। ठीक है, so it will start showing here. Then we have record history. So this is record history. I'll talk about the record history in the in a little while। Okay, so अभी 30 minutes nearly हो गए हैं, but we'll continue with this। Okay, so थोड़ा फास्ट करते हैं। Study का overview and summary is one of the important thing। Again, full thing is important, but इससे आपको बहुत सारी information मिल जाती है यहीं पर ही। जैसे अगर आप लाइन ऑफ थेरेपीज ऑन्कोलॉजी की बात करें तो लाइन ऑफ थेरेपीज आर समटाइम वेरी डिफिकल्ट, बट वो आपको यहीं पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में उसकी लैंग्वेज लिखी हुई होगी। ठीक है,
ऑन द राइट हैंड साइड यूल सी कि स्टडी स्टार्ट कब हुआ था, मई 2024 में हुआ था। प्राइमरी कंप्लीशन जुलाई 26 का है। स्टडी कंप्लीशन 27 का है। टोटल नंबर ऑफ पेशेंट इज 134। इट्स अ इंटरवेंशनल स्टडी, इट्स फेज 3 स्टडी। ये उसका ब्रीफ समरी और डिस्क्रिप्शन हो गया। इसमें इंटरवेंशन टाइप में बेसिकली यू कैन सी द ड्रग नेम एंड द प्लेसिबो, इट इज यू नो। और ये स्टडी का एक अनदर स्टडी आईडी है, इफ यू गूगल इट यू विल फाइंड इट। ठीक है। नाउ कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड लोकेशन, सो यू नो Andy, he or she is basically the primary investigator in this. ठीक है। And this Liana Ran is the second one. Now here you can see there is an interactive map. There is an interactive map. You can see United States में चल रहा है कौन कौन सी लोकेशन। तो फिर फॉर एग्जांपल आई क्लिक ऑन विस्कॉन्सिन, देखो ये आ गया। ठीक है। तो ये यहाँ पर इन्होंने सारी डिटेल्स दे रखी। ठीक है। ओके, नाउ इफ यू मूव ऑन, this is participation criteria. So when I say participation criteria, the inclusion criteria basically, inclusion criteria, मतलब sorry, inclusion and exclusion criteria, कि किन बेसिस पर वो एक्सक्लूड होगा या इंक्लूड होगा। सो फर्स्ट इंक्लूजन क्राइटेरिया, जेनेटिकली कंफर्म्ड डायग्नोसिस ऑफ PWS। सो PWS जो होता होगा, इट्स अ जेनेटिक डिसीज, इसके कोई बायोमार्कर्स होते होंगे, तो दे आर सेड कि जब तक जेनेटिकली असेस ना हो जाए। सो फॉर एग्जांपल इट्स नॉट बेस्ड ऑन डायग्नोसिस एंड ऑल, इट इज बेस्ड ऑन कंप्लीट लेबोरेटरी टेस्टिंग। ठीक है। और जो भी उसका जेनेटिक बायोमार्कर होगा उसको चेक करके दे विल से कि हाँ इसको PWS है। उसके अलावा एक्सेसिवली डे टाइम स्लीप होता होगा, मतलब he must be sleeping throughout the days। ठीक है। have consistent parent caregiver or giver to, okay, ओके। तो इनके इंक्लूजन क्राइटेरिया में है कि उनके पास एक केयर गिवर या असिस्टेंट या पेरेंट हो। In the opinion of investor, the patient are capable of understanding, right? Okay. So, condition समझने वाला, तो ये these are basic informations, but exclusion criteria क्या है? Has diagnosis of sleep apnea। ठीक है। अगर उनको sleep apnea है तो he or she will be excluded। The patient will be excluded। Have diagnosed hypersomnia due to other sleep or medical disorder। हाइपरसोमनिया हुआ तो एक्सक्लूड हो जाएंगे। पार्टिसिपेंट इन इंटरवेंशनल स्टडीज इन्वॉल्विंग अदर इन्वेस्टिगेशन। सो अगर किसी और इन्वेस्टिगेशनल स्टडी को आप ले रहे में हैं तो और वो आपने उसका 30 डेज के अंदर अंदर वो ट्रायल में आप थे तो आप नहीं कर सकते हैं इसमें पार्टिसिपेट। देन यू हैव रेंज, एज रेंज, जेंडर। हेल्दी वॉलंटियर्स ले रहा है ये स्टडी? नो, बिकॉज इट्स अ फेज 3 स्टडी, सो हेल्दी वॉलंटियर नहीं ले रहा है। देन इट कम्स टू स्टडी प्लान, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। स्टडी प्लान में प्राइमरी पर्पस क्या है? ट्रीटमेंट है। एलोकेशन इज रैंडमाइजेशन। सो अगेन आई डोंट नीड टू टेल यू ऑल व्हाट इज रैंडमाइजेशन, ग्लॉसरी में, और नहीं पता है तो प्लीज ग्लॉसरी में जाके पढ़िए, बिकॉज इट्स एंड यू कैन ओपन दिस इन ग्लॉसरी। ये बहुत अच्छा फीचर आ गया है कि यू कैन ओपन दिस इन ग्लॉसरी। सो आप यहाँ से देख सकते हो कि एलोकेशन क्या होता है, रैंडमाइजेशन वगैरह क्या होता है। देन इंटरवेंशनल मॉडल, सेम चीज, डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा। व्हाट इज पैरेलल असाइनमेंट? देयर आर 3-4 टाइप ऑफ interventional, parallel, crossover, open label, single arm, all this kind of. Masking is quadruple. When you say quadruple masking means कि किस किस को ये नहीं पता कि किसको क्या मिल रहा है। So in this case, participant, care provider, investigation and outcome assessor, चारों को ही नहीं मालूम है। So it is a quadruple blinded study basically. So किसी को नहीं मालूम except the company who is providing the drug कि किसको क्या मिल रहा है। सो बेसिकली होता क्या है कि 2 आइडेंटिकल टाइप ऑफ ड्रग बनाए जाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल दिस वन वुड बी वाइट, 3 mg और समथिंग लाइक दैट। इधर वाला भी वाइट होगा, 3 mg वगैरह का होगा, बट दोनों में अंतर क्या होगा कि एक ड्रग होगा और दूसरा प्लेसिबो होगा। ठीक है। अच्छा, अब आर्म्स क्या है? आर्म्स है कि स्टडी में मतलब
कैसे डिवाइड किया है? तो एक्सपेरिमेंटल आर्म है और एक प्लेसिबो आर्म है, देयर इज एन ओपन एक्सटेंशन पीरियड। तो ओपन एक्सटेंशन पीरियड लेबल एक्सपेंशन जो है वो ये है कि भाई स्टडी को जितना भी टाइम अभी मैं आपको बताऊंगा तो उसके बाद भी ये चलेगी, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म चलेगी। ठीक है, फॉर एंड ये दवाई दी जाएगी सबको, मतलब तब प्लेसिबो से कंपेयर नहीं होगा, तब ये मेडिसिन दी जाएगी बेसिकली। ठीक है, तो दिस इज ट्रीटमेंट नाम यूजुअली यहाँ पर डोसेज फॉर्म, जैसे यहाँ पर टैबलेट लिखा है विच इज ओरल हो गया। कितनी फ्रीक्वेंसी में, वंस डेली फ्रीक्वेंटली में, मॉर्निंग एंड वंस डेली करना है मॉर्निंग में उठते ही, सो प्रोबेबली विदाउट फूड और एनीथिंग इट मस्ट हैव बीन टेकन। तो ये होगा। और उसके अलावा प्लेसिबो में भी सेम चीज लिखी जाती है। ठीक है, then comes outcome. Outcomes are very important criteria कि रिजल्ट किस बेसिस पर आएगा, है ना? So outcome measure is change in the severity of EDS as measured by the patient research outcome, reported outcome, measured information system bank, some this promise SRI tool कोई scoring system होता है उसके बेसिस पर। So promise SRI item consists of 13 items with 5-point ranking system. Okay. तो टाइम फ्रेम बेसलाइन से एंड ऑफ द डबल ब्लाइंड ट्रीटमेंट पीरियड विच इज 77 डेज। तो 77 डेज के अंदर अंदर मतलब 77 डेज में इसका रिजल्ट आ जाएगा आफ्टर पेशेंट गेट रिक्रूटेड बेसिकली। ठीक है, एक बार पेशेंट रिक्रूट हुआ उसके बाद। सो अभी ये सेकेंडरी आउटकम्स आप पढ़ सकते हो इन सेकेंडरी आउटकम्स को, एंड इनकी अगेन टाइम फ्रेम दे रखा है और इनका आउटकम का मेजर क्या दे रखा है। ठीक है, देन कोलैबोरेटर और इन्वेस्टिगेटर, मान लो हार्मनी बायोसेंसेस के अलावा यहाँ पर कोई और इन्वेस्टिगेटर होता है या कोलैबोरेटर होता है तो उसका नाम होता है। ठीक है, लास्ट रिकॉर्ड अपडेटेड, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ है। देन हिस्ट्री, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से क्लिक करके ले सकता हूँ, रिलेटेड अदर स्टडीज बेसिकली ये यहाँ पर बताया है उसने। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट इज रेड। अभी अपन देखते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि सो मुझे अगर ये जानना है कि गिव यू केस, मुझे अगर ये जानना है कि यू नो ये स्टडी 2000 मतलब मार्च में स्टार्ट हुई थी और मई से अब तक क्या क्या चीजें अपडेट हुए हैं। ठीक है, आई वांट टू नो अबाउट दैट, सो आई विल गो इनटू द रिकॉर्ड हिस्ट्री, आई विल क्लिक ऑन इट। सो आप देखो यहाँ पर कितना यहाँ पर स्टार्ट हुआ था, ये 12 अप्रैल को ये स्टडी एनलिस्ट हुई है। ठीक है, एंड देन 8th ऑफ मई को इसका रिक्रूटमेंट स्टार्ट हुआ, तो आई शो यू हाउ इट शोज। ठीक है, सी दिस इज हाउ इट शोज। अर्लियर अप्रैल में एस्टिमेटेड था, 30th को एक्चुअली हो गया। ठीक है, आई थिंक ये अप्रैल में ही स्टार्ट, जब ये डाली होगी तब ये स्टार्ट थी स्टडी। बट हाँ, यू गॉट द पॉइंट कि यहाँ पर रेड से स्ट्राइक आउट किया हुआ है और ग्रीन से यहाँ पर अपडेटेड इंफॉर्मेशन डाली गई। तो दिस इज हाउ यू गेट दैट इंफॉर्मेशन। अगर इन दोनों में कुछ लैंग्वेज में चेंज होता तो यहाँ पर भी वैसे ही दिखाया जाता कि मान लो स्टडी का एस को कट करके मतलब रिमूव किया एंड वहां पर छोटा कर दिया फॉर एग्जाम्पल, सो समथिंग लाइक दैट। ठीक है, दैट्स हाउ यू चेक दी हिस्ट्री ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, सो अभी आज इतने पे एंड करते हैं, आई एम वेरी टायर्ड राइट नाउ। ठीक है, एंड so thank you once again for watching this. Share it with whom it feels relevant. ठीक है, and let me know if this helps you. Then yeah, okay. Thank you. Have a nice day. Hello. So, this is an extension of the video. A quick announcement. I have gotten associated with an organization called AHPA, Academy of Healthcare and Pharma Analytics. So they are very my thought process and their aim kind of aligns with each other. So I have got associated with them.
they have launched a one-to-one mentorship program, which I have reposted on my LinkedIn page. I will put the link in the description of this video as well. तो आपको अगर लगे कि if you think with me, I know someone, you know there is another person, basically Pratik. So Pratik is an old friend. He is also uh, doing this with me. And if you feel ke, after watching my these videos and all, and if you feel that I can add value to your uh, CV writing, to guide you for the interviews and all those things, so register for that one-to-one program. Again, link will be in the description of this video, and if you go onto my LinkedIn page, you will find that there also. So yeah, happy learning. Have a great Dashera. May Ma Saraswati, you know, add value. माँ सरस्वती की कृपा आप सब पर बनी रहे. Basically, that is what I pray. So thank you once again and take care. Bye bye.